माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Just be seated. You are quite aware about the proceedings, I think, so I have to just... स्थगन प्रस्ताव की माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा, आप अपने लीडर को बुलवाना चाहते हैं? आप are you interested that he should speak? So let us you should allow me to just to ask कि at least all the ministers they should keep the paper. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Law and Justice as mentioned against my name at serial number 2 in the today's revised list of the business. Thank you, sir. Item number 3 श्री प्रताप राव जाधव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। सभापति जी, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज मैं सदन के पटल पर रखती हूं। आइटम नंबर 5 श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of External Affairs as mentioned against the name of my colleague, Shri Kirtivardhan Singh, as per today's revised list of the business. Thank you, sir. Item number 6, Shri Santanu Thakur ji. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name, the serial number 6, on today's revised list of business. Thank you. Item number 7, Shri Sanjay Seth ji. Well, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy each in English and Hindi of the papers mentioned against my name at serial number 7, today's revised list of business. Item number 8, Shri Bhupat Raju Varma ji. Respected Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper pertaining to Ministry of Steel mentioned against my name at serial number 8 in the revised list of business for today, the 12th December 2025. Item number 9, Shri Pavitra Margarita ji. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 9 in today's revised list of business. Item number 10, Dr. Nisikant Dubey ji. सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। Item number 11, Shri M. Nivasulu Reddy ji. Thank you very much, Chairman, sir. Sir, I rise to present the 7th report, Hindi and English versions on the subject, Review of Atal Mission for Regeneration and Urban Transformation, Amrut, with special emphasis on urban drinking water of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs 2025-26, listed against my name in today's list of business, sir. Item number 12, Shri P.C. Mohan ji. Please. Shri Bhaskar Bhager ji. Honorable Speaker, sir, I rise to lay two statements, Hindi and English version of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment 25-26 as listed against my name at serial number 12 in today's list of business. Item number 13, Shri Triveni Singh Rawat ji. Second.
श्री हिमाद्री सिंह, श्रीमती हिमाद्री सिंह। Sir, I rise to lay on the table the 401, 402, 403 and 404 reports, Hindi and English version of the department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change as listed against my name at serial number 13 in today's order paper. आइटम नंबर 14 श्री प्रताप राव जाधव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा द्वारा दिशा निर्देशों के 73 के प्रावधानों के अनुसरण में मैं आयुष मंत्रालय की राष्ट्रीय आयुष मिशन की समीक्षा के संदर्भ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 156वीं और 162वीं रिपोर्ट में निहित विभिन्न सिफारिशों पर विवरण में उल्लिखित क्रियान्वित स्थिति की सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 15 श्री भूपति राजू वर्मा जी। Respected Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the statement pertaining to Ministry of Steel mentioned against my name at serial number 15 in the revised list of business for today, the 12th of December 2025. आइटम नंबर 15 है श्री जेपी नड्डा जी। Sir, I rise to make a statement regarding the withdrawal from the Contingency Fund of India during the financial year 2025-26 to meet essential payment obligations relating to imported urea. आइटम नंबर 16 श्री तेजस्वी सूर्या जी। Sir, I wish to move that this House do extend time for the presentation of the report of the Select Committee on the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2025 up to the last day of the first part of the budget session 2026. Thank you. प्रश्न ये है कि श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब शून्यकाल।